Sit with your spine erect. सीधा बैठ जाएं. Breathe in, lift your chin up. Breathe out, chin to the chest. सांस अंदर लें, थोड़ी को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ें थोड़ी छाती पर. One more time. With the next breath, gentle neck rotations from the right. दाहिनी ओर से गर्दन को गोल घुमाएं. Observe the effect of the rotation on the rest of the back as well. गर्दन को गोल घुमाते हुए गर्दन के अलावा पीठ पर हो रहे असर पे भी ध्यान दें. Don't be in a hurry. Enjoy the movement. And reverse. अब विपरीत दिशा. And relax. Come back to the center. Place your palms on the shoulders. Breathing in, elbows forward and up. Breathing out, back and down. सांस लेते हुए पूरा गोल घुमाएं. जब हम मुस्कुराते हुए आसन करते हैं तो उसका और अच्छा असर होता है. And you're smiling and stretching, it works doubly well. Reverse the direction. And relax. Now fold your left arm behind on your waist. बाएं हाथ को अपनी कमर पे पीछे रख लें. Breathe in, raise the right arm up. दाहिना हाथ ऊपर. Fold it and place your palm on the left ear. दाहिनी हथेली को बाएं कान पे रख लें. अब बस हल्के से अपनी गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं. Very gently tilt your head to the right. Do not pull the head with your palm. अपने हाथ से सिर को बिल्कुल नहीं खींचेंगे. बस हल्के से ढलका देंगे. दाहिनी भुजा पे सिर को टिका लेंगे. And feel the stretch happening in the left shoulder. 2 to 3 breaths. Breathing in, gently straighten the head, release the arm and bring the left arm out. Now fold the right arm behind the waist, दाहिना हाथ कमर के पीछे. सांस अंदर लें, बायां हाथ ऊपर और अपने दाहिने कान पे रख दें. Place your left palm on your right ear and gently tilt your head to the left. Make sure you're not tugging or pulling your head at all. Long deep breaths. A deep stretch for the shoulder. Breathing in, gently straighten the head and release both the arms one after the other. Very nice. Now catch hold of your opposite elbow with your palm. अपनी हथेली से विपरीत कोहनी को पकड़ लें and gently start rocking side to side. We are giving a gentle twist to the spine. दाएं बाएं झुलाते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी को एक ट्विस्ट मिल रहा है और ये हर कोई कर सकता है. Everyone can do this. Gently, right, left. Now start lifting your elbows a little higher and you will see the twist shifting to the middle section of your spine. अब अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए दाएं बाएं झुलाएं. अब आप पाएंगे रीढ़ की हड्डी के मध्य हिस्से में हल्का सा ट्विस्ट. ऐसे ही हथेलियों को थोड़ा और, हाथों को थोड़ा और ऊपर उठा लें. Lift your arms a little higher. And very gently come down. धीरे धीरे नीचे आ जाए.
Excellent. And last, let us shake out our wrists. अपनी कलाई को झटक दें. थोड़ा जोर से कर सकते हैं इसे. And relax. Let us just stay there for a few moments with our eyes closed. आंखें बंद रखें. आराम से बैठ जाएं. Gently, you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल लीजिए. Once again, a very, very warm welcome to everyone to day 9 of the 14-day breath and meditation challenge. आज आपका कौन सा दिन है अटेंड करने का, वो नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या आज 9वां दिन, हर दिन आप आ पाए हैं तो वो लिख दीजिए. और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है. If you're joining us today for the first time, you're welcome and you've made a very good decision because you're going to learn some techniques, some breathing techniques and experience meditation that will help you in a big, big way. And the rest of us, let us mark our attendance in the comments. And also later in the session, we will give you time to share your gratitude list. So right now, you can let the comment section be and be a part of the session. Yes? Today, let's talk a little bit about our brains. You know, in our brain, there is a portion called the prefrontal cortex. It's present in the front half, you know. And this is the part of the brain which is responsible for our thoughts, or rather it regulates our thoughts, our emotions, our decision-making, focus, and even our behavior. Now, as we age, the thickness and the gray matter of this prefrontal cortex, it starts reducing. Now, it is found that meditation can increase both the thickness and the gray matter of the prefrontal cortex. Isn't that amazing? In fact, research found that 50-year-old meditators had the same amount of gray matter in their PFC as 25-year-olds. So, you know, for anti-aging of our skin, we use creams and serums and whatnot. But for anti-aging of our brains, meditation is the best tool. देखिए, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ये हमारे सर के सामने के हिस्से में होता है और इससे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी एकाग्रता की क्षमता, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारा व्यवहार भी इससे नियंत्रित होता है. अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी मोटाई कम होने लगती है और इसका असर हमारे ब्रेन फंक्शन पे पड़ता है. अब पाया गया है कि मेडिटेशन के द्वारा इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मोटाई को बढ़ाया जा सकता है. हाँ, आपको जान के अचरज होगा, एक रिसर्च हुई जिसमें 50 साल के लोग, जो लोग बहुत सालों से ध्यान करते आए हैं, जब उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देखा गया, उसकी मोटाई वैसी थी जैसे एक 25 साल के युवा की होती है. तो आपकी त्वचा की एंटी एजिंग के लिए हम अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, पर मस्तिष्क की एंटी एजिंग के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण एक तकनीक है हमारे लिए. So let's begin today's session with our pranayam practice. We are all quite well versed with the pranayams today, so we'll not give very detailed instructions. But for those, in case you're joining today for the first time, you can keep your eyes open and gently follow my instructions. Yeah. If you have any of the health conditions listed on the screen, you can avoid this first pranayam called Bhastrika. Rest of the pranayams everyone can do. Yeah. So let's take position, loose fist in front of the shoulders, elbows close to the body. In Bhastrika, when I say breathe out in, you will breathe in, take your arms up and open the fist. जब मैं कहूँगी सांस अंदर तो हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी. And when I say breathe out, you'll breathe out forcefully and bring the hands back down. This way. Yeah. If you have high blood pressure but it has been controlled with time and medication, you can do Bhastrika, but do it gently like this. Okay. So let's begin. Let's take position. Normal breath in and breathe out. Together, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in,
out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Observe the sensations in the body and the mind. Let's get ready for the second round. दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं. हल्की मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से लगी हुई और कंधे ढीले. Keep your shoulders loose and relaxed. A normal breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. And for Bhastrika, with a pinch of force and enthusiasm, breathe in, out, 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 and relax. Palms open on the laps. हथेलियों को खुला रखें घुटनों पर. शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाए. Third and final round of Bhastrika. Take position. तीसरा और आखिरी round. Take a normal breath in and breathe out. मुस्कुराते हुए एक सांस अंदर लें और बाहर छोड़ दें. फेफड़ों को खाली कर लें. Breathe out completely. Together, breathe in, out, 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 and relax. विश्राम करें. And you may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So today we are going to learn a variation of candle blowing. आज हम कैंडल ब्लोइंग का एक दूसरा रूप सीखेंगे. In this we breathe in from the nose and take our head back. And then from there we come back here by breathing out 7 to 8 bursts. Okay? Let me just show you. Just the way you were blowing out candles, now you think that there are 7-8 candles like this and we are blowing each one of them out as we come back. Yeah? सांस अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे. फिर 7 से 8 फूंक मारते हुए हम अपने सिर को वापस इधर ही ले आएंगे. Let's begin this together. We will do 5 breaths. 5 round करेंगे. Breathe in, take the head back and blow. Breathe in. Breathe in.
Continue. And one last time. And relax. Keep your eyes closed for a few moments. कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद रखें. Keeping your eyes closed, let's take position for Bhramari Pranayam. Index finger on the cartilage right next to the ear. अपनी तर्जनी उंगली को कान के पास जो छोटी सी ढकनी है उस पे रख दीजिए. We will do this on our own 5 times. We'll breathe in through the nose and out through the nose. Make the humming sound and open and close the lids. 5 बार अपने आप करें. Mm.